Good morning, children. So, today we are going to learn chapter number 1, that is nutrition in plants. This is your first chapter of class 7th. So, in this video, we will discuss the topic that is nutrients, mode of nutrition in plants, and photosynthesis, and rest of the topic we will discuss in next video. Okay, students. So students, first we are going to discuss the nutrients. Okay, we are going to discuss the nutrients. So children, in class 6th you have learned about the food, right? That is, food is essential for all the living organism. Okay, and you also learn about the nutrients or components of the food, right? So nutrients or components of the food is very essential for our body, right? So what are the nutrients? So nutrients are the components of food. Okay, so these are the components of food, right? These are the components of food, nutrient. So you also have learned carbohydrate, proteins, fats, vitamin, and minerals. Okay, so these are the components of the food or the nutrients of the food, right? These are called the nutrients. Okay, and these nutrients or component of the food is very essential for our body growth. Okay, so children, all the living organism require food, right? So plant can synthesize their own food, but the animals cannot, है ना? Animals अपने food नहीं बनाते हैं. Plants make their own food with the help of the photosynthesis process, right? But animals cannot make their own food. So humans or animals are direct or indirectly dependent on plants. Understood, everyone? Right? Okay, now come to the mode of nutrition in plants. So students, you all know that plants make their own food by using water, carbon dioxide, and minerals. Okay, these raw materials are present in their surrounding. Understood, everyone? Now here, what do you mean by mode? Mode means process. Mode means process, and nutrition means taking food. Taking food. Okay, so what is the definition? Definition means nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization .
by the body. Okay, so nutrition is the taking food, way of taking food, how any organism taking food, right, and the utilization by the body. अंडरस्टूड. जैसे हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, है ना. तो और जब इनटेक करते हैं फूड को, तो फूड कहाँ जाता है, हमारे बॉडी के अंदर. सो वहाँ पे क्या होता है, हमारे सेल्स, हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, उसका यूटिलाइजेशन करती है. जो फूड है उसका क्या करती है, यूटिलाइजेशन करती है. ठीक है, सेल्स में एब्जॉर्ब होती है. सो दैट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन. ओके, सो देयर आर द three modes of the nutrition in plants. How many? There are three modes of nutrition in plants. So first is autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. Next is heterotrophic nutrition. Saprotrophic mode of nutrition. Okay, so these are the three modes of nutrition in plants. Now children, our next topic is autotrophic nutrition. So I hope you all understood what is nutrition. Okay, so nutrition means mode of taking food. Yes, so what is autotrophic nutrition? Let's see. So auto means, here the word auto means self, and trophic means nourishment. Okay, so auto means self and trophic means nourishment. So the mode of the nutrition in which organism make food themselves from simple substances, right, means जो अपना फूड खुद बनाते हैं. ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, है ना. हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन, राइट डाउन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make food themselves. ठीक है, themselves मतलब अपना फूड ये खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, सो आप एग्जाम्पल बताइए, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. यस, प्लांट्स. सो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, है ना. प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ. ठीक है, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, सो प्लांट्स आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, प्लांट्स को क्या कहते हैं हम, ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, क्यों, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, so here heterotrophic nutrition. So hetero means others. Okay, hetero means other and trophic means nourishment.
So animals and other organism take their food prepared by plants, है ना। ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, ओके, लाइक एनिमल्स dependent on plants for their food, right? So here what is the definition? Animals and other organisms take in food prepared by plants, ओके। सो हेटरोट्रॉफ्स में क्या जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ये आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, एंड लास्ट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। Now saprotrophic nutrition. So in this mode of nutrition in which organism take in nutrients from dead and decaying matter, right, that is called the saprotrophic nutrition. So the write down the mode of nutrition in which organisms take nutrients from, कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है, जो सड़ जाते हैं, जो मर जाते हैं और मरने के बाद जो सड़ जाते हैं वहाँ उनसे वो अपना फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, okay. So this is the saprotrophic nutrition, okay, understood everyone? Autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition and saprotrophic nutrition, okay. And now our next topic is photosynthesis, okay. So students, we know that plants make their own food, right? So let us try to understand more aspect related to the plants. So here there are some questions related to the plants, right? So first question is, how do plants prepare their own food? So the answer is, plants make their own food with the help of photosynthesis process. Photosynthesis, okay. What is photosynthesis process? We will understand this photosynthesis in detail after, okay. So photosynthesis means food making process in plants, okay. This is the food making process in plants, okay. Now the next question, in which part of the plant food is made, okay. कौन से पार्ट में प्लांट जो है, प्लांट का कौन सा पार्ट है जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, okay. So you know that our food is made in
किचन, है ना, कहाँ पे बनता है हमारा फूड? इन किचन। सिमिलरली प्लांट्स मेक देयर फूड इन लीव्स। ठीक है, कहाँ पे बनता है? इन द लीव्स। ओके, सो leaves are the food factories of the plant, right? So leaves are food factory of plants. And now the next question is, from where plant get raw materials for its food preparation? Okay, now what are the raw materials? So raw materials are carbon dioxide, water and minerals. These are the raw material. Okay, and plant gets carbon dioxide from air. कहाँ से लेता है plant carbon dioxide? from air. Okay, and plant get water and minerals from soil. Understood everyone? So now we will study all the three questions in detail. ठीक है, अब हम डिटेल में सारे क्वेश्चंस को जो भी अभी हमने डिस्कस किया उनको अब डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस. वी विल try to understand what is the process of photosynthesis. Okay, students, our next topic is photosynthesis. Okay, so first of all we will understand what is photosynthesis. Okay, so here photo means sunlight. Okay, photo means sunlight, and synthesis means to combine. Okay, so photo means light or sunlight, or synthesis means to combine. So the process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट्स हैं अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं वो किसके प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट में. ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में. और कौन कौन से जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो यूज़ करके सनलाइट के लेके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं. राइट, सो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड वाटर. these are the raw materials which green plants uses. Okay, so this is the photosynthesis process. Now here this is the diagram of photosynthesis. Okay, so here chlorophyll is present in a leaf. ठीक है, chlorophyll क्या होता है? a green pigment which is present in leaf. ठीक है, and सनलाइट को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है. सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आपको पहले एक इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की आप देख लो, देन आफ्टर हम डिटेल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस? here CO2 plus water. सनलाइट के प्रेजेंट सनलाइट को यूज़ कर रहा है. ठीक है, एंड बाय यूजिंग क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन
प्लांट्स। ठीक है, लीव्स में जो होते हैं, प्लांट में जो होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। एंड देन क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, बाय यूजिंग क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दिस क्लोरोफिल containing cells of leaves in the presence of sunlight, ठीक है, presence of sunlight uses carbon dioxide and water and क्या बनाते हैं, carbohydrate and oxygen. So this is the process of photosynthesis. I hope सबको जो है समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है ना, ये ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज़ होती है। अंडरस्टूड?